हेलो एंड वेलकम बैक। वीकली राउंड अप ना फ्राइडे को आया, ना सैटरडे को आया, ना संडे को आया। मेरे पास आ गए बहुत सारे डीएम, क्योंकि बजट भी हो गया, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी भी आ गई और हमारे पास एके की साइड से कोई इनपुट नहीं था। तो बहुत लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, उनको आई एम प्रीटी श्योर मेरे रिप्लाईज भी मिल गए होंगे कि हम लोग थोड़ा सा लेट चल रहे हैं बिकॉज ऑफ the kind of movements and the kind of busy schedule that we had because of budget and other things. तो वीकली राउंड अप इस हफ्ते में एक और चीज हो जाएगी कि हम दो दो वीकली राउंड अप कर रहे हैं, एक वीक के स्टार्टिंग में और एज पर दी अवेलेबिलिटी ऑफ एक हम वीक के एंड में भी करेंगे। तो चलिए, ये तो था एक ब्रीफ की क्यों थोड़ा सा आगे पीछे हो गया टाइमलाइन। बट विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, एक्साइटिंग थिंग्स हैपेंड ओवर द वीकेंड। लेट अस सी आगे क्या डायरेक्शन निकलता है। हाय एके, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? Hi. Hi, good evening. Good evening. I'm fine. Thank you. How are you? आई एम गुड। How was your budget? But of course, you are good. You know, the way markets moved up last week, the entire week, I expected you to be feeling extremely good. Uh, but आज मंडे आज सुबह क्या आपका ख्याल है आज सुबह का न्यूज़ देख के? वीकेंड तक आई वाज हैप्पी एंड आई वाज वेरी रिलैक्स्ड। बट मंडे मॉर्निंग गिफ्ट निफ्टी देखते ही मैं सुबह जल्दी नहा के भगवान की पूजा में बैठ गया था, सो दैट मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। एंड समहाउ सेकेंड हाफ में आई थिंक भगवान ने मेरी थोड़ी सी सुनी है, बट किस हद Right. तक सुनी है और क्या क्या हुआ है, आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर। तो बताइए, Right. हुआ क्या नेक्स्ट वीक, लास्ट वीक? So basically, you know what? I was kind of expecting a pre-budget rally. मैंने आपको last week के उसमें बोला था कि pre-budget rally एक आनी। हालांकि बहुत ज़्यादा बजट से expectation out in public थी नहीं, but still a pre-budget rally आना थोड़ा ज़रूरी भी था, and the way markets had gone down below lower low for 6 weeks, 7 weeks consecutively. I feel that it was in the offing, it was coming. So we saw that itself. If we talk about last week, how it went, uh, we saw a low of let's say 22,791, and the rally the week topped out at 23,634. So we are looking at 900 point upside on Nifty. So basically, markets, as I was saying, have been kind of immune to the specific budget specific announcements. अगर आप देखें तो एक दिन का या 2 दिन का मैक्सिमम थोड़ा उठापटक रहती है मार्केट में बजट को लेके, बट स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो इस बार मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इस बार कंज्यूमेबल्स के लिए, ये सब के लिए 99% सेक्टर्स के लिए बजट अच्छी आई है। See, the major thing is that 20 the news about zero tax for income up to 12 lakhs. Relax. Clearly, what the good thing about this budget is that it is acknowledging what the current situation is, and it is trying to address it. That is a very very good thing, because what has happened is that, see, slowdown is there, consumption slowdown is there, and India's growth story is on consumption. तो एग्जैक्टली। अगर वही स्लो डाउन हो जाएगा तो हमारी ग्रोथ स्टोरी विल गो आउट ऑफ द पार्क। सो उस चीज को रियलाइज करना और उस पर एक्ट करना वाज द नीड ऑफ द आवर, विच टू एन एक्सटेंट is possible, or is it's a step in that direction, कि ये 12 लाख तक की इनकम को आपने टैक्स फ्री कर दिया है। तो इसीलिए इफ यू सी सैटरडे को ऑल कंज्यूमेबल्स, ऑल एफएमसीजी, दे वर ऑल 5, 6, 7% अप। उसी तरह से ऑटोज, ऑल ऑटोज वर 5% अप, मारुति, टाटा मोटर्स, एवरीबॉडी वाज 5% अप। राइट।
तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है इसके लिए ओवरऑल अक्रॉस ऑल सेक्टर्स इट हैज बीन पॉजिटिव. आई डोंट थिंक एनी सेक्टर आई कैन थिंक ऑफ जिसके लिए नेगेटिव है बजट. Hmm. हाँ, maybe you can say that the BFSI was thinking that long term capital gains tax थोड़ा rationalize हो जाएगा. तो ये सारी चीजें नहीं हुई, बट ये सारी चीजें करना भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एज यू नो बिकॉज ऑफ दिस टैक्स एग्जेम्पशन Hmm. there is going to be an exchequer hit. So there is not, it's not viable for them to reduce an LTCG or or an STCG. So so basically what has happened is, I feel, in my opinion, the budget has been extremely relevant, taking Right. into account the current situation and really addressing it. So I think it's a superb budget for that matter. This I'm talking about just the budget, because and मैं पहले आपको पहले ये बोल दिया कि मार्केट और बजट को थोड़ा आप डीलिंक करके सोचिए. Right. This I think this with most traders, they have this problem. They cannot delink the market and the budget. And the budget. At Right. the end of the day, at the end of the day, your budget is going to impact the working of certain companies, जिसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट पे आएगा, जो प्राइसेस में रिफ्लेक्ट करेगा. तो आप समझ रहे हैं वो इम्पैक्ट कितना ट्रिकल डाउन करके मार्केट में आता है. एक पॉलिसी चेंज का इम्पैक्ट पहले प्रोडक्ट पे होगा, फिर आउटपुट पे होगा प्रोडक्ट के, फिर उस कंपनी की बैलेंस शीट पे आएगा, उसके बाद स्टॉक मार्केट पे आएगा. Exactly. So it's a तो long, long प्राइसिंग पे chain which will take some yeah, it's a quarters time long to. and correct, and it gets trickled down. The impact Hmm. gets trickled down. So unless we see a major, absolute major move in a budget, Hmm. where Hmm. जैसे for example, I'm just giving an example. uh, आप समझिए कल या अगले बजट में या कभी फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट टैक्स घटा दिया 4% से. Hmm. अक्रॉस कॉर्पोरेट टैक्स ही घटा दिया 4% से. So that is something that is sort of a game changer. Right. ऐसी कोई न्यूज नहीं आई है, ना नेगेटिव साइड में ना पॉजिटिव साइड में. जो करंट हालात है, कंजम्पशन की ग्रोथ नहीं है, वो सारी चीजों को दे हैव टेकन इनटू अकाउंट एंड मेड पॉलिसीज एंड टेकन स्टेप्स टू मिटिगेट दोज थिंग्स. So basically, नाउ if हाउ we मच. yeah, if we try and understand this thing, we can also take it like this: that what point you're trying to put forward is they have accepted the fact that yes, we are facing some kind of Yes. slowdown, and just by accepting Yes. and giving a hint to the Mhm. people that yes, we have accepted, halfway through they have changed the sentiment, because up till now we were under an impression that the government is not ready to think in those directions, and the data and everything was so messy for the entire structure to understand. So now by Mhm. this budget they have at least given us an idea that yes, we are there, we are understanding the situation, and we are trying to help you out with that. Yes, that's absolutely correct. So, in that case, how do you think this another story which happened in US? Well, morning mein there was something else, and night mein there was altogether different. How do we read it? So the thing is, this the week has started with a bang, I would say, and there is a lot more coming in this week. I'll quickly move to our regular format of the week coming ahead. We are already in this week, so on a Monday, I'm talking to you all. See, what today happened has got nothing to do with budget. Okay, Right. budget सैटरडे सेशन के बाद बजट की इम्पैक्ट सारी फेड आउट हो गई. जैसे मैंने आपको बोला, एक दो दिन की बात होती है मार्केट में बस. Hmm. इनफैक्ट द काइंड ऑफ टैरिफ्स ट्रम्प हैज अनाउंस्ड, Hmm. इट इज एविडेंट दैट देयर इज अ ट्रेड वॉर. इनफैक्ट उसके बाद जस्टिन ट्रूडो की भी स्टेटमेंट आ गई है दैट दे हैव पुट काउंटर टैरिफ्स ऑन Hmm. द यूएस. Right. So, so if a country like US is
on a trade war with चाइना, मेक्सिको, कनाडा, आजू बाजू के लोग और जो बिगेस्ट सप्लायर है पूरी दुनिया का, Hmm. तो इट इज बाउंड टू, आई डोंट नो, see, maybe in terms of pure trade relationship with US, we are not that hampered because we are not that big. वो import export net off होके ज़्यादा बड़ा वो नहीं है exposure. But problem is that when a country like US goes on a trade war with emerging economies, all Hmm. emerging currencies, they get hampered. तो आपने देखा आज सुबह डॉलर 87.30 टच कर गया. It was a drastic this thing. Hmm. So you know what? Our economy will continue to get hurt because of a weaker rupee if this thing goes on. हमारी जो ऑयल इंपोर्ट्स है उसके लिए हमको ज़्यादा पैसा लगेगा और बाकी इंपोर्ट्स के लिए ज़्यादा पैसा लगेगा, तो मतलब इवेंचुअली आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स विल गेट कंप्लीटली हे वायर. बट जैसे आपने Hmm. बोला, सी, देर इज नथिंग दैट इंडियन मार्केट्स कैन नॉट हैंडल. It took half a day only. It went back up. Right. And technically speaking, 23,350 is now looking at a like a strong level. If it Okay. can hold 23,350, so we can see a possible run up. So yeah, so I'm basically looking at a range wherein 23,350 को एकदम फोकस रख के, अगर Hmm. कोई बुल है 23,350 को एकदम फोकस रख के अगर पोजीशन बनाना चाहे तो बना सकता है. ऊपर में 400 पॉइंट टॉप्स. I am not looking at another level of 24,000 or 24, and not in this week at least. Right. Hmm. Also the volatility will continue. अगर आप देखें तो इस वीक में आरबीआई की पॉलिसी है, rate cut is more or less factored in into the market Hmm. because everybody is speaking of rate cut and everybody is saying it is the need of the hour. RBI has to Right. do it. Okay. ऐसे में अगर आरबीआई हॉकिश स्टांस लेके बोल रहे कि वी आर मॉनिटरिंग दिस सिचुएशन, तो तो बहुत खराब होगा मार्केट्स के लिए. आई एम टेलिंग यू, इट विल अगेन क्रैक डाउन. So दैट इज वन थिंग. सेकंड इज दिल्ली इज हैविंग इलेक्शंस. Right. हालांकि रिजल्ट 8th को आएगा, मार्केट्स विल बी क्लोज्ड, बट Hmm. you know, once the voting ends and all these exit polls Exit and the, polls. yeah, the news starts covering, so all sort of speculation comes in. Right. But then I also need to consider what if any of our viewers are looking for a bearish position? What would be the level wherein they trigger it, and what would be the downside that we can see after that trigger point? And what do you have to suggest for them? Again, I'm not going to speculate on the triggers and how much drawdown it can get. uh, Hmm. you know, but I would like to reiterate that the undercurrent of the market is still negative. Okay. It is still a bear market overall. If I have Hmm. to make a position, I'll be more comfortable in a short position rather than a long position. That I'm So well aware of. so if uh, I have to do a trade, on a day like today where markets go up. Not today, actually. Today was down. On a day where markets go up 300 points up, I'd rather create a short then, rather than 400 points नीचे जाके मैं long create करूँ. So yeah. So speaking of that, I right now the triggers that are coming in, what kind of shocks it may give, and how Hmm. much drawdown it can give. So that is kind of difficult to pinpoint because it's first of all it's just way too many things. Secondly, the quantum of FII exodus out of India, whether it will continue at that rate or not, I didn't see the final figure for January, but I am expecting anything
nothing less than Hmm. 90,000 to 95,000 crores. थोड़ी Got क्लैरिटी आएगी रचित, बी पेशेंस, थोड़ी क्लैरिटी आएगी, थोड़े इवेंट्स होने दीजिए। अभी तो क्या है, आप देखिए एक और चीज, बजट आया, यहाँ अमेरिका का टैरिफ्स आया, बीच में इतना अच्छा जीएसटी कलेक्शन का फिगर आया, वो गुल हो गया। दैट हाँ, न्यूज गॉट nobody, कंप्लीट। yes, nobody was talking about it, surprisingly. Nobody is talking 1.96 lakh crore is a crazy amount. And it Nobody just is talking went about it. away. मतलब वो क्या है, दो बड़े बड़े जायंट्स के बीच में एक न्यूज आई और चली गई, पता हाँ, नहीं चला। इन अ नॉर्मल सिचुएशन दिस वुड हैव बीन अ गुड trigger पॉजिटिव for the ट्रिगर market. एटलीस्ट फॉर अ डे। Huh, या I know. And very frankly, now because you have put it forward, and I would actually like to thank you because we have not even discussed that point. It was only the budget and US market and done. It was a very important news that the GST collection has gone up to those levels. यस, Uh, so I believe that might be the reason that there was a covering in the second half of the market wherein uh, something might नहीं वो have, but difficult to say. look at, see how I see it. What you saw in the morning was a Hmm. reaction, okay, Of US. ऑफ यूएस। वो एक Right. रिएक्शन था। जो आपने बाद में देखा ना, वो एक्शन था। Got क्या it. है इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, अपसाइड हो डाउनसाइड हो, लोग रिएक्ट पहले कर लेते हैं, एक्ट Hmm. बाद में करते हैं। ओके, Got it. इफ सम बैड न्यूज कम्स आई विल फर्स्ट हिट द सेल बटन, Hmm. देन आई विल सी व्हाट इट इज। Got it. And I keep saying only one thing: you please act. Whether you are taking a long position or short position, please act. Don't react. Don't I react. have I have said multiple times in this weekly roundup. Please Monday morning खुलते ही deep dive मत कर लीजिए. Hmm. There Hmm. is no need. Midday में position बनाइए, थोड़ा सोच समझ के बनाइए. You'll get a better idea as to how it has to be taken ahead. Price Absolutely. it like this, that there are two major events which we will witness in this week, and for which I believe that after a time we are getting a bit of bullish side movement ideas from AK, and it should only be executed if the market sustains above 23,350 and can go up till around 23,750, 23,800, and there you Yeah. should book your positions. If you are a bear, then I believe you can take a contra call at those levels and see as to how the market cools off and gets the benefit out of it. So, as always, it was amazing talking to you and taking an entire view roundup. थैंक यू एंड इस बार जाते वक्त मैं ये नहीं बोलूंगा हैप्पी वीकेंड, बट जाते हुए बोलूंगा एक्साइटिंग एंड गुड ट्रेडिंग वीक अहेड, and Yes. we'll catch up on Friday and see as to how it has panned out. Thank you. Done. Thank you. Thank you so much. Bye bye.